Hello, friends. Good morning to all of you. In last session, we have completed AS4 and AS5. Okay, AS4 is contingencies and events occurring after balance sheet date, and AS5 is net profit or loss for the period prior paid items, changes in accounting policies. Friends, in contingencies and events occurring after balance sheet date, we have divided it in two parts. One is adjusting event, second one is non-adjusting event. Adjusting event means what? Assets and liabilities have to be adjusted if conditions are existing on the balance sheet date, and you have additional evidence after balance sheet date up to the date of approval, then you will change your assets and liabilities. And in the case of a non-adjusting event, you will only disclose it. There are no conditions which are existing on the balance sheet date. Then we have seen net profit or loss for the period, which is divided into three parts. Number one is ordinary activities, which are day-to-day activities. The second one is extraordinary activities, these other than ordinary activities. And one is exceptional item, which are in nature and size. They are different from the ordinary activities, and therefore you have to be separately disclosed. Prior paid items has to be separately disclosed, which is the errors which are occurred in the current year due to the you have to rectify your errors of the in the current year of related to past year. So that is prior paid items. And changes in accounting policies means principles which are accepted while doing while preparing financial statement, and if you want to change it, this change is called as change in accounting policies. And estimates is nothing but whatever provisions you have made in the books of accounts is called as estimations. So friends, then we have started with accounting standard 7 construction contract. Okay, so गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बेटा सुबह सुबह आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं। प्राची जी गुड मॉर्निंग बेटा, विनय गुड मॉर्निंग, यस किरण जी गुड मॉर्निंग, सबसे तेज किरण जी, दर्शन जी, भूमिका, दीक्षा, मनीषा, रितेश, कृति, हर्षित, स्वाति, दिव्या, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। बाकी के बच्चे बेटा से गुड मॉर्निंग बेटा इन कमेंट सेक्शन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बेटा। सैटरडे संडे हमें छुट्टी नहीं है। टुमारो ऑल्सो वी हैव टू वर्क हार्ड। ओके, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए हमें एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर कल भी करना है। और देखो हफ्ते से 4 दिन मैं भी जल्दी उठ रहा हूँ, आपको 7 दिन जल्दी उठना है। चलो जल्दी से, यस ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। यस बेटा कार्तिक जी, योर मैसेज आर रीचिंग टू मी, डोंट वरी। राजू कुमार, मोहम्मद जी, चलो गुड मॉर्निंग बिबू, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बस हो गया, गुड मॉर्निंग वाले सब अभी चालू करते। S7 में हमने क्या देखा था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नॉट कॉन्ट्रैक्टी, एंड वेयर वी आर गोइंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड। क्रेडिट साइड इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेबिट साइड, हाउ टू रिकॉर्ड इट फॉर। देन वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली द asset, combination of asset, and remember that are closely interchangeable, the interdependent in case of design, technology, and function. You have taken a screenshot of this. Then types of contract, you have two types of contract, fixed price contract और cost plus contract। उसमें हमने देखा था fixed plus fixed sum and fixed rate। ओके, हमने ये दो देखे थे। उसके बाद cost plus में reimbursement देखा था। मेजरमेंट के हमने 3 वेज देखे थे, इफ यू रिमेंबर। 3 वेज में से परसेंटेज कंप्लीशन, सर्वे मेथड और फिर फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड, ये हमने देखा था तीनों मेथड्स को स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में। एंड टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू होगा तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हमने देखा था आउटकम मेजर रिलायबली के कुछ क्वेश्चंस, कि उसमें 4 कंडीशंस होती है जो एग्जाम में आ सकती है। टोटल रेवेन्यू कैन बी मेजर रिलायबली, दैट इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दोनों में भी हो सकता है। बोथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू बी कंप्लीटेड एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्राइस में आएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, ये दोनों में आने वाला है। सो कॉस्ट प्लस में 2 थे और फिक्स कॉस्ट में, फिक्स प्राइस में 4 होते। आई थिंक एग्जाम्पल भी देखा था। एग्जाम्पल देखा था क्या? वी हैव फिनिश टिल विच बेटा एग्जाम्पल्स? थोड़ा सा भूल चुका हूं मैं। टिल एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर कहां तक पहुंचे थे? चलो बताओ जल्दी से।
what we have finished. If you are not maintaining your notebook separately, if you are not writing in your notebook, screenshots आप लोग हाथ से नहीं लिख रहे हो तो बेटा याद कर लेना कि हमारा अटेम्प्ट जाने वाला है. If you are not serious about your studies, so daily basis पे whatever study sir हम लोग कर लेंगे, future will not happen. You have to be very careful on daily basis. Example 2 is also finished with. Okay बेटा, एग्जाम्पल 2 भी फिनिश हो चुका था. हाँ जी. Now today we are going to see treatment of cost relating to future activity one by one. It's there in your study material. It's there in your study material. Remember, treatment of cost related to future activity. Sir, you have to recognize this is an asset. Okay. Future activity से related cost you have incurred. And if you are sure about your amount, such amount is known as amount due from customer. Okay. So you have already incurred the cost. But how to record it for? If suppose, if it is probable that that cost will be recovered from the customer, then you will record it as amount due from customer and you will classify as WIP. So today's screenshot, आज का screenshot number 1 है. Last session तक आपने देख लिया था. Today's screenshot number 1. Today's screenshot number 1. You will record it as it is, you have incurred cost which is for future activity. So it is amount which is receivable. Due from means what better? Receivable from customer. And if amount is receivable from customer, you are recording as WIP. Nothing is difficult in this. Very simple, my friends. Uncollected revenue, uncollectable revenue. Next one. Uncollectable revenue. Friends, when an uncertainty exists, you are not sure about your revenue. सर हमें पता ही नहीं हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. काम तो कर लिया सर, contract complete किया in the books of contractor, and now you are not sure whether your contractee will pay you or will not pay you. When uncertainty exists about the collectibility of an amount which is already included in the contract revenue. मतलब क्या sir? Provision for doubtful debts. एकदम simple छे. Then the uncollectible amount is recognized expenses or adjusted against revenue. तो आपको ये uncollectible amount को recognize कर दो. Normally it is provision for doubtful debts, but in contract account you can adjust it against revenue. So ये एक था जो आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है. तो this is also today's screenshot number 2. Either pause करके लिख लो recorded वालों, otherwise screenshot निकाल के ले लो. You can complete it today itself. Recording में देख रहे हो तो pause करके लिख लो. If you are watching this lecture in recorded one, you can pause and you can take notes. एकदम easy है रे, एकदम easy. Uncollectible contract revenue पूरा रट जाना चाहिए. Whatever you are writing in your notes as a theory,
पूरा रट जाना चाहिए. So at the time of reading, beta, you can recall these all things in a better way. Don't take accounting standards, beta, lightly. मैं पहले ही बोल देता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लाइटली लेंगे बाद में बड़ा पछताओगे बेटा. ध्यान में रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी भूलना मत कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. चलिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये ऑलरेडी लिया था, रे. एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाइए. चलो एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3. Show profit and loss account extract in the books of contractor in respect of the following data. Contract price is 600 and your total is, yes, I want my calci. कैल्सी देते हो क्या? कैल्सी दे दो ना वहां से तो ना ये तिकड़ त्या रूमला कैश खराब है. 650 में बेटा देखो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज मार्क दिस एज IMP. According to S7, estimated losses should be recognized immediately. Estimated losses. Now, what is your total cost? 650. 650 is the total cost. And 600 is your revenue. So 50 is your loss. So estimated loss 50. 650 is the cost. And what is beta actual loss? 390. And actual loss, see, 390 divided by 650 is equal to 60%. Percentage of completion. Percentage of completion. Percentage of completion 60%. So I will record my revenue 600 into 60%, 360. So my loss will be, I want to record it as 50. So I will provide for in future
estimated loss is higher and actual loss is only 30. Actual loss कितना है? 30 है. Actual loss is 30. Whichever is higher, I am going to record it for. So by loss is 50. So I have to provide for 20. एक बार हिंदी में समझ लो. Yes, it's very easy question. See बेटा, देखिए. See, loss to be recognized is estimated loss or actual loss, whichever is higher. Now my estimated loss, 650 is my cost, contract price is 600. So 50 rupees. Actual loss, ये total cost है. तो actual cost minus actual revenue that you are going to record it for. Actual cost is 390. Actual revenue is contract price multiplied by percentage of completion. Contract price is 600 multiplied by percentage is 390 upon 650. Percentage का कौन सा फॉर्मूला यूज किया? Percentage of completion is equal to actual cost divided by total cost. AC divided by EC, estimated cost. So 600 का 60%, 360, 30. So I will go with 50. And 50 loss मुझे record करना है, तो I will provide it for extra 20 rupees का loss. Simple. Simple. मजा आई भी? Yes. बहुत मजा आया सर. Yes. इजी था ये आंसर. कैसे निकालना है समझ में आया? Tell me it in comment section, easy or difficult. Example 3. Easy है. अरे इजी है क्या? बोलो जल्दी बेटा. इजी છે? ओके. आसान है. वेरी गुड. सो एग्जाम्पल 3 इजी છે. इधर एक चीज याद रखना. Yes. Now take a screenshot. प्रोविजन इजी है ना बेटा? स्क्रीनशॉट 4 है.
चलिए आगे निकलते हैं। नाउ वेरी मेरी रट्टा मार पॉइंट चालू हो रहे, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। Standard identifies certain cases where more than one contract. Combining matlab more than one contract is becoming single contract, and more than one contract taken as one combine, and single contract you can better break it in the segmenting, todna. So combining matlab both cases, combining also and segmenting also. So you will prepare only one contract account, and here different contract accounts. So ये उसका मीनिंग है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे एंड हियर यू विल प्रिपेयर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। सो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, इसको हम लोग बोलेंगे कंबाइनिंग वर्सेस सेगमेंटिंग। सिंपल जय, यस। स्क्रीनशॉट 5 either you can pause or you can write recorded में और टेक अ स्क्रीनशॉट लाइव वाले। बहुत सारा लिखना है, आई नो दैट, बट बेटा otherwise it's very difficult. You will stuck to this, you know, accounting standard syllabus is vast. You have to finish it in time. Each construction contract is treated as a separate contract. Remember, each construction contract you will treat it as separate contract. Segmenting, separate proposal for each asset. रट्टा मार छे, रट्टा मार। एग्जाम क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, when to keep a separate contract if there is separate proposal, red pen, proposal, okay, separate negotiation for each and every asset, for each and every contract, and cost and revenue can be identified for each contract, each asset. Then these are the conditions. This is called as segmenting. So ये याद रखो, ये रट्टा मार पॉइंट है। स्क्रीनशॉट नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट नंबर 6 है। Very good, Harshit. Very good, बेटा। Genuinely बताओ, tell me frankly, you're finding this accounting standard सुबह सुबह interesting or difficult one? मॉर्निंग में रोज सुबह आके बेटा यार ये क्या है, यार क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा तो नहीं होता ना आपको? यू आर फाइंडिंग दिस सिंपल वन, additional asset differs significantly from the original contract, sir. Design technology function, additional asset and separate negotiation for that asset. Customer can able to accept or reject. Significantly different. ये पॉइंट रेड पेन छे,
सेपरेट निगोशिएशन मतलब एसेट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। सर ये थ्योरी में आता है। कौन सा स्क्रीनशॉट 7 था? मैं नंबरिंग्स भी करके देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। ओके, हर्षित तो बोल रहा है मैं तो बहुत जल्दी उठ गया। स्वाति इज वेरी बेटा लाइफ से जो बोलते हैं ना कि भाई ऐसी मेरी लाइफ है, सब बोरिंग नहीं है, और बोरिंग लगे तो भी क्या ऑप्शन है। हाँ जी बेटा जी, यस बेटा, मतलब ये मेरे घर के जैसा होगा बेटा, ऑप्शन क्या है, रहना तो पड़ेगा घर में। यस वेरी गुड स्वाति, बहुत सही आंसर दिए। चलिए, कंडीशंस में बेटा क्या होता है कि एक बार आपको पूरा पूरा चीज समझ में आ गया ना कि ये क्यों है। अभी फॉर एग्जांपल जस्ट यू अंडरस्टूड कि हाँ भाई, सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच एसेट, सेपरेट नेगोशिएशन, व्हाट यू कैन डू। हाँ, आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, एक मस्त आइडिया बताता हूँ। व्हेन आई एम रीडिंग दिस स्टैंडर्ड और आई एम टेकिंग नोट्स, और आपको मैं पीपीटी बता रहा हूँ ना, एट दैट टाइम यू कैन डू वन थिंग। इट्स वेरी सिंपल दैट यू जस्ट have study material in front of you and you won't get bored because you know sir what is going to tell him next. So what is the next point that you can easily tell me? So it's given in the study material all these points, and you can identify ki how sir has made it very simple. So आपको ये बोर भी नहीं होगा। एंड सपोज इफ यू नो कि मैं नेक्स्ट डे क्या लेने वाला हूं, so you can read it from your study material. So before class 20% preparations are already over, and after that you can attend my session. Then once again while writing the theory, you are taking screenshots. Sir is telling you to take these screenshots, these are very important. So while writing, understanding concept, 30% part is getting over, 20% is before class, 30% is after class, and 50% is while writing these notes. So but your accounting standard, you are completing it within one day also. And most important point, you can easily recall all this point at the time of revision. Okay, so revisions are very, very important, and students are making mistakes while learning accounting standards. They are not serious. They're just taking, while class, कि it's just हाँ accounting standard चल रहा है, जो हमारे सर भी करते थे। मतलब when I was in CA final, 30 days he took for accounting standard. And students are getting bored while writing consolidated accounts, then amalgamation problems. We were happy कि हाँ भाई कुछ तो लिख रहे हो, एटलीस्ट सपोज समझ में भी नहीं आता था, but at least we were writing. And he never made accounting standard easy in chart format, because traditional class था कि just सुबह उठ के जाओ at 6 o'clock और just you sit to that place. फिर दूसरे दिन मन भी नहीं लगता था, आधा क्लास खाली, फर्स्ट 10 days पूरा क्लास भरा हुआ रहता था. Now बेटा life changes. Now it's very simple. You can sit anywhere, anytime. You can learn from the ICI regular, ये पूरे available ही है sources. But you are not taking, efforts on this.
You don't want to write it in your 100 pages book. Then you are taking it like एक cinema देख रहे हो, movie देख रहे हो, and then आप everything you forgot. तो वो मत कीजिए. Go line by line. I am saving my time by giving you the screenshots. पर वो screenshots ईमानदारी से लिखो. You write it on daily basis. It's very important. Okay. Yes. चलिए, बहुत हो गया आज का ज्ञान. हाँ, ये देखिए, sir, you have told us to read the topics before class. So after reading, when I attended the class, so I found it interesting, and even recognizing my mistake where I wrongly interpreted the sentence in the module is very important. Very good, beta. Raju Kumar, you are doing absolutely 100% correct things. This is how you have to read. Chalo. आज से करना. आज से every one of you, please read it before class. Any standard, S9, tomorrow I am going to start with S17. Amalgamation, we have a separate class. So amalgamation में मैं नहीं सिखाएगा आपको. अब भी S14 we will take at the time of amalgamation. Maybe I or some other faculty. ठीक है. So screenshot number 7 भी ले लिया था आपने? Yes. And beta, when you are going to combine, when you are going to combine conditions, when you negotiated it as a single package, negotiations as a single package, and contracts are closely interrelated, and they are parting a single project with overall profitability margin, and they are performing on the continuously or concurrent sequence, then beta you can. आज के दिन का 8वां स्क्रीनशॉट. अरे बाप रे सर. यस, जो भी बॉक्स किया है वो रेड पेन से लिखना. यस, चलिए. Continuous sequence, contract cost and revenue. Now it's very, very important. चलो, now we are at the end of this chapter. Example 4 देख लेते. Example 4. XYZ Construction Limited is a construction company, undertakes the construction of an industrial complex. It has separate proposal raised for each unit in the constructed in the industrial complex. Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify cost and revenue of it attributable to each unit. मतलब हर एक यूनिट का आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे. सो व्हाट आर द कंडीशंस? सेपरेट प्रपोजल ऊपर ही किया ना हमने. सेपरेट प्रपोजल, देन ईच सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, एंड कॉस्ट एंड revenue can be identified. If yes, each unit is a separate construction contract. मतलब हर एक यूनिट का
contract account you are going to prepare. You will prepare a separate account, contract account for separate unit. ये इसका मीनिंग है. रट्टा मार पॉइंट. रट्टा मार points. Yes. ठीक है बेटा. रट्टा मार पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज. कहां तक हो गए अपने स्क्रीनशॉट्स? 8 तक हो गए ना. कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट. देखिए ये भी आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यू हैव initially agreed upon plus variation. Sir, escalations variation में means what? Now at the time of making contract आपने बोल दिया था कि मुझे ये चाहिए, and now suppose for example you told I want oil paint, and then beta someone told you, so your contractor has given you the quotation. Your contractor has given you the quotation as per oil paint, and then you think कि नहीं भाई oil paint नहीं है, मजा नहीं आ रहा है oil paint पे, wall पे दीवारी की पपलियां निकल रही है. So you told them, you please change the paint and now it is luster. आपको चाहिए luster. सर oil paint नहीं चाहिए भाई, luster करवा दो. So sir, contract price बदलेगा? Yes, variations. So that is called as variations. Claims. Additional claims if price changes. He may ask you incentives. Okay. इंसेंटिव्स वाई? कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है ना, यू आर कॉन्ट्रैक्टी, मेरे बुक्स चल रहे. इंसेंटिव्स, इफ आई फिनिश दिस कॉन्ट्रैक्ट विद इन 15 days, आई हैव गिवन यू टाइम ऑफ 50 days, 15 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा दिया दोस्त. सो बेटा यू शुड गिव मी सम इंसेंटिव्स दैट यू हैव डन इट बिफोर द गिवन टाइम. सो बिफोर टाइम इफ आई हैव कंप्लीटेड द कॉन्ट्रैक्ट, then contractor should get some incentives. Sir, incentives समझ में आए क्या? It's very simple. Incentives. Penalties. Deduct penalties. If I have not given you the time commitment, उसमें मैंने complete नहीं करवाया. जो ऐसे के लेक्चर्स है ना, वो कभी ऐसा होता नहीं है. Commitment is commitment. Penalties, जो टाइम दिया हुआ है उससे में कंप्लीट करना ही पड़ता है दोस्तों. सो पेनल्टीज. सो हमें पेनल्टी नहीं बैठेगा, पर सपोज वही मैं प्राइवेट में लूंगा, मेरा सिलेबस टाइम में नहीं कंप्लीट हुआ, तो स्टूडेंट्स कैन आस्क मी फॉर पेनल्टीज. सो दैट इज माय लॉस. ओके, यू आर कॉन्ट्रैक्टी, आई एम कॉन्ट्रैक्टर. कॉस्ट क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वट एवर कॉस्ट related directly, material, labor, direct expenses, these are my cost. Then if supervisor, he's working not only on one contract, you know, costing chapter, allocation and apportion. So you can allocate cost. Allocation is not the correct word here. If you take the difference between costing and accounts, allocation means directly charge, and apportionment, it should be apportion जो contract cost. But accounts वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. मुझे ऐसा दोनों का experience है accounts costing, so I can tell you the difference exactly. It is made, it should be apportion cost, contract cost. But ठीक है, मतलब supervisor, if he is working on 5 contracts, तो how much cost is apportioned to this cost contract? This apportionment. But here
you can use it interchangeably, allocated, but there is a difference, allocation and apportionment. Cost chargeable to customer, बाद में कुछ cost होंगी, वो cost, tender cost. Incidental revenue, sir, I am a contractor. You have given me a space. Okay, अभी 5 buildings का contract है. Out of that, I started with first building, and 4 buildings are still, that space is empty, vacant. As a contractor, now that authority is with me. Now I will do whatever I want in that 5 premises, and I am earning some parking space ka revenue from that. So cost is getting reduced, and you are not also objecting. Why? Because you think abhi kaam de diya hai. Now he will decide. Either he wants to give it on the rent. Now I want my contract in this 3 months or 6 months. So for that, suppose if I am getting some benefit out of that, that will be deducted. Second one, if I use one plant and machinery on your place, you are a contractee, I am a contractor, and then but I sold that plant and machinery. At some scrap, I sold it, or material scrap, I sold it. So that will be my incidental revenue. That will be deducted. Exclusion. If administration cost I'm incurring and I'm not getting the reimbursement, sir, your cost, yes, but I will record it in the general P&L, not specific to that contract account. Contractor has 2 accounts. Remember, one is specific contract account, and one is P&L account. Trading account or P&L account. Trading account, instead of that, you will prepare contract account. And P&L account is for general expenses. So this is exclusion. Exclusion means it will be recorded, but not in the contract account. It will be recorded in P&L account. Students are making mistakes. So it is not recorded in the accounts. Mein record nahi hoga nahi. It is recorded, but where it is recorded? In P&L. Okay. You are going to record. खर्चा किया तो record करेगा ना तू. कहाँ पे करेगा? P&L में करेगा. किधर करेगा? P&L में करेगा. समझ में आएगा बेटा? एकदम बढ़िया छे, एकदम बढ़िया. Okay. So ये याद रखो. General administration cost. बड़ा. When I started my journey with ICAI BOS, one thing is very, funny. Yes, ऐसा आपको याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये फेस टू फेस क्लास में ना मैं ऐसा रटवा के लेता था. यस, इनिशियल एग्रीड प्राइस, वेरिएशन, क्लेम्स, इंसेंटिव. सामने स्टूडेंट्स होते थे, पर बहुत टाइम जाता था, बहुत टाइम वेस्ट. फिर मैं जब बोर्ड ऑफ स्टडीज का लेक्चर लाया फर्स्ट टाइम, मुझे मिला. So I thought how I can teach to students if there is no person in front of me. It's not possible. So मैंने क्या किया, मेरा one of my student, I told him कि now you come to my place in my family. You please मेरे साथ 1 महीना 2 महीना तू रह जा. But he cleared in the first attempt. पर मेरे सामने तू रहे कि मैं सिखा पाऊं. In 2020, I think, कोरोना के टाइम पे, just before Corona, I got this assignment of 2 sessions: hire purchase, branch accounts. I think नहीं, branch भी नहीं था मेरे हिसाब से. Insurance claim I got. First batch of board of studies. From that, I started my journey with ICAI board of studies. I am very thankful to board of studies ki her time and your love. I got enough sessions.
I left my coaching with in face-to-face batches. Then I shifted to, this virtual coaching. And now I'm very happy. Though, there are no students in front of me, but this technology, I can comment, I can contact with you with the help of BOS app. And students are also showing love, beta, ki yes, पिंपरी चिंचवड ब्रांच को भी कांटेक्ट करते हैं. आई नेवर स्टार्टेड ना, मैं उनके साथ सिर्फ क्या होता है कि जूम बैचेस जो होती है हम लोग उनके साथ लेते हैं at very affordable prices. मतलब प्राइवेट क्लास का फीस 10,000, they are charging only 1,000, 2,000 rupees. But one benefit of, I said, they are collecting all money. But what I want to tell you from that, कि ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आई रियली डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट्स और नॉट. बट अभी इतना मैं यूज्ड टू हो गया हूं ना कि सामने कोई स्टूडेंट होगा या नहीं होगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. ओनली कैमरा वर्क्स. मजा आता है स्टूडेंट सामने रहेगा तो, बट ऑब्वियस इंटरेक्शन इज देयर. बट आई सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ सपोज इफ आई वाज इन फेस टू फेस क्लास, इन 3 days, बिलीव मी, मैं एक ही स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकता था. बिकॉज टाइम पास है, ये है, वो चीज है. यहां पे पूरा फोकस क्लास पे रहता है. And you are also learning in the same way. I have seen the proportion. I asked to some faculties, sir, what is your proportion of face-to-face class and recorded classes का कितना आपका ये जाता है? So they told me, sir, face-to-face classes में hardly there are 20 students होंगे, but recorded one we can sell 80 students को. Is 20 to 80. CA final classes are completely shifted in Pune from face-to-face to recorded one. No one is buying, face-to-face classes. They completely stopped. Hardly 1-2 faculties are there who are taking these classes. But beta, in recorded lectures, you have to be very serious. ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं, those who are not joining on day-to-day basis, and you have to write all these things. बस आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो कि सुबह मुझे उठना है और सर के क्लास को जाके बैठना है. नहीं हुआ, इट्स ओके, यू हैव अदर कमिटमेंट्स, बट यू ट्राई टू फिनिश ऑल सेशंस. एंड बिलीव मी, if you complete your 100 pages का book on day-to-day basis, क्योंकि मुझे वो नहीं समझता ना, फेस टू फेस में वो फायदा होता था, I can check students notebook. Here that is only the one thing. पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, but some बच्चा बोलता हूं मैं तुम्हें, result was very less. And now I know in my Zoom sessions, result बहुत अच्छे आए हैं. Even recorded lectures, अपने जो ICI के है, results are very good, beta. Students, they message me, sir, I cleared due to your, thinking process. We developed ourselves. पर बेटा आप लोग यदि एक नोटबुक मेंटेन नहीं करोगे, अभी इतना मैं क्यों बता रहा हूं कि आप बाद में आप जब स्क्रीनशॉट्स लेते हो, प्लीज फिनिश इट ईमानदारी से. बस इतनी एक बात कीजिए, नहीं तो मैंने सिखाया हो ना, कुछ काम में नहीं आने वाला. एंड बाद में आप वापस ये लेक्चर को देखने भी वाले नहीं हो, क्योंकि इतना टाइम इच नहीं है. एंड यू गेट द रिजल्ट बेटा, वेरी बैड रिजल्ट्स. 20-30 ओनली 25 स्टूडेंट्स दे पास बेटा. व्हाई? बिकॉज दे आर सीरियस फॉर देयर स्टडीज. बस एक ख्वाहिश है कि क्लास होने के बाद ईमानदारी से लिखो, कुछ भी होने दो, ईमानदारी से लिखो, ईमानदारी से लिखो. ओके, चलिए. तो yes, very good, Karthik. Harshit, I hope selling cost also you are going to record it in P&L, research and development also, and depreciation of idle plant and machinery. So this is contract revenue and contract cost.
यस। टेंडर कॉस्ट क्या होता है भूमिका? टेंडर कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा? जब हम लोग टेंडर भरने जाते हैं ना बेटा, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बेटा, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देखो आपके न्यूज़पेपर में भी टेंडर कॉस्ट होती है कि नोटिस जब ओपन होती है ना, तो आपको इनिशियली कुछ खर्चा करना पड़ता है। टेंडर भरने के लिए भी सामने वाले को पैसा देना पड़ता है, मतलब वो नहीं, ये अंडर द टेबल नहीं बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली टेंडर भरने के पहले इतनी इतनी कॉस्ट जमा कर दो, फिर आपको टेंडर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो कॉस्ट जोड़ देने का बेटा, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं टेंडर कॉस्ट। टेंडर को एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, हिंदी को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, पर उसको बोलते हैं टेंडर कॉस्ट। यस, ठीक है। यस बेटा, सुनील कुमार। एंड ये जो टेंडर कॉस्ट है ना बेटा, ये एक्सक्लूजन्स लिख लो बेटा, एक्सक्लूजन्स। स्क्रीनशॉट नंबर क्या था रे? भाऊ चहा करायला सांगा त्यांना। स्क्रीनशॉट नंबर क्या था? 9 था ना, मैं क्या कर रहा हूं मैं? 9 था। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट 9। नाउ बेटा व्हाट हैपन, चेंज इन एस्टिमेट्स। अच्छा, इंस्टीट्यूट के इसमें से हो गया अपना, ये भी 6, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब देखो ना, मटेरियल, लेबर, depreciation of that asset, cost hiring, design specifically to the contract, rectification and guaranteed work, general cost given in examples, changes in estimate beta. We are at the end of this chapter. Change in estimates, revenue, cost and outcome. Treated as a change in estimate as per S5. अरे S5 हुआ ना, change in estimate. Recognized as revenue and expenses in P&L in which change is made. ठीक है। चेंजेस इन एस्टिमेट्स क्या क्या होता है, किसमें? रेवेन्यू में चेंज, तो S5 के हिसाब से रखने का। डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, इज वेरी सिंपल, ये लिखो भी मत। डिस्क्लोजर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, अमाउंट, मेथड मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन। टेक अ स्क्रीनशॉट।
डिस्क्लोजर का स्क्रीनशॉट 10। डिस्क्लोजर्स, हाँ जी प्राची, हमारे जेब से गया तो स्पेसिफिक कॉस्ट है, रेवेन्यू में भी आएगा बट स्पेसिफिक कॉस्ट में आएगा। डिस्क्लोजर्स इन WIP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये बताएगा मैं आपको, डोंट वरी। प्रेजेंटेशन में ये भी, ये स्क्रीनशॉट लास्ट है। ये कौन सा था बेटा, 10 था ना ये 11 है, स्क्रीनशॉट 11 है, ये आएगा, ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम कस्टमर एंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर 12, 8, 10 या 10, 11, 12, हाँ बस खत्म। एंड हियर वी हैव फिनिश विद द स्टैंडर्ड। कैसे लगा बेटा आपको ये स्टैंडर्ड? गिव मी इन कमेंट सेक्शन। चलो, स्टैंडर्ड आपको समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरी प्रॉब्लम्स तो वी आर गोइंग टू सॉल्व, सो थ्योरी यू आर फाइंडिंग इट्स नाउ इजी। तीसरा एज भी आपका रटवा दिया बेटा मैंने, क्या 17, 18, 19, 20 चार स्टैंडर्ड्स है, चार। उसके बाद 22 है आपको, 24 है, उधर के चार, 12 स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक यू बेटा आर्या। तो कैसा होता है भाई, प्राची बोल रही है एकदम इंटरेस्टिंग है। देखो एक बार मॉड्यूल के सभी पॉइंट्स कवर हुए क्या, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मॉड्यूल आया समझ में तो बेटा कुछ तो स्टैंडर्ड मैंने सिखाया अच्छे से। पूरा मॉड्यूल सर ने बढ़िया तरीके से बनवा दिया सर, गायब ही हो गया मॉड्यूल। एक बार याद कर लो, चलो पूरे मॉड्यूल के पॉइंट्स कवर हुए क्या, सब एग्जांपल्स, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। और मेरा मॉड्यूल कहाँ गायब हुआ रे? कितने पेज का था? 1, एप्लीकेबिलिटी ये तो आता है, कॉस्ट और ये भी बताया, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड भी बताया, परसेंटेज कंप्लीशन के बाद S7 का पॉइंट ये भी बताया, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्यूचर एक्टिविटी अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बताया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी हुआ, 8 भी हुआ, 9 भी हुआ, 10 भी, 9, और ये भी हो गया। अभी ये मुझे एक्सप्लेन करना है, ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल्स भी हो गए ना सभी? हाँ जी, एग्जाम्पल्स भी हो गए, कुछ बचा ही नहीं, आपने कुछ रखा ही नहीं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1। यस फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इज कंप्लीटेड। S7, now it's time to do illustrations, 2 illustrations। सर एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस के लिए क्या करें? एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस के लिए कुछ नहीं, आप लोग पिछले कुछ भी
switch how you buy one scanner and you do that because it's not possible that everything I will cover over here. हाँ, मैं हमारे इसमें कवर कर लेता हूँ जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देता हूँ उसमें, बट इसमें नॉट पॉसिबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 80% मेरा इधर हो जाता है, 20% फिर आई कांट टेक इट हियर बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट्स. स्कैनर्स मतलब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. सो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बेटा नॉर्मली आई टेक इट इन माय पिंपरी चिंचवड़ में मैं कवर कर लेता हूँ वो, बट इधर इट्स नॉट पॉसिबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस. यदि आपको समझ में आ गए तो स्कैनर के क्वेश्चंस यू डू बाय योर ओन, पर इधर होना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके, यस. रोशन, यस मैं बताता था. अभी मैं उसका एक अलग से फाइल भी बनाया था, पर ठीक है अभी. यस, अभी रहने दे बेटा. हाँ, हो सकता है मैं आपको बताऊंगा तो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली नोट्स आर प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू, डोंट वरी. ठीक है, चलो. चलिए बेटा. फर्म कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस. चलो ये कंप्लीट करो आप लोग, ये कंप्लीट करो. चलो फटाफट कंप्लीट करो ये क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 1 यू डू बाय योर ओन. पहले समझ लो एंड देन आस्क मी कि क्या है करके. चलो फटाफट. नो बेटा, इट इज अवेलेबल विद देम. तेजस, करण कुमार पटेल, दिस इज न्यू कोर्स सिलेबस की क्लासेस है ये. यू कैन अटेंड इट फॉर May 24 also because same syllabus is there. Please write down after solving this question, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्या समझ में आया. आई एम गिविंग यू 5 minutes, exactly 5 minutes. I will start at end 8:11 फॉर दिस क्वेश्चन. ब्रेक मिलेगा आप लोगों को, डोंट वरी, ब्रेक इज डिफरेंट. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 5 minutes है आपके पास. पूरा स्टैंडर्ड का ओवरव्यू समझ में आने दो. लास्ट में हम लोग रिकॉल करेंगे. ओवरव्यू समझा तो पूरा स्टैंडर्ड समझा, यदि याद आ रहा है तो.
चलो ओवर बेटा, हुआ क्या नहीं हुआ? आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। यस, मनीषा ने आंसर दिया, कार्तिक ने भी दिया, वेरी गुड बेटा। देखिए गर्म पानी है, नींबू डाल के, डोंट थिंक कि दूसरा कुछ है। ओके, ध्यान दीजिए। A firm contractors obtain a contract for construction of bridges across river Revti. The following details are available in the records. Total contract price 1000. अभी देखो यहाँ पे assistance in the presentation of accounts. आंसर को देखिए, आंसर को देखिए। एंड प्लीज 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 गिव फीडबैक्स ऑफ एडवांस अकाउंट्स। देखो बेटा, आपके जो फीडबैक्स है ना वो हमारे लिए बहुत मायने करते फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि फैकल्टी का रेटिंग आप लोगों के चॉइसेस के हिसाब से होता है फॉर नेक्स्ट बैचेस ऑल्सो। सो इफ यू थिंक कि नहीं भाई संकेत सर का अच्छा नहीं है तो गिव दैट इज फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फाइंडिंग सिंपल तो गिव प्रॉपर फीडबैक्स। फीडबैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो आईसीआई भी फीडबैक्स पे ही काम करती है, प्योर फीडबैक्स। See how you are going to disclose it. एग्जाम में कैसे लिखना है? Now first you have to yes identify कि question में क्या क्या है। Contract price is 1000. So this is revenue side. Work certified for the cost incurred 500 and work uncertified for cost incurred 500, 105 and 495 1100. Progress payment received. This is important while calculating due from or to customer. And this is important at the time of calculating profit or loss. See what you have to present. Contract revenue. Now how to calculate contract revenue based on the, this is based on the percentage completion. Now percentage completion is cost incurred divided by total cost. $500 cost incurred is 500 plus 105. 495 is a future cost to complete. So this is, you can write over there 605 plus 605 plus 495, 1100. So 1000 का 605 divided by 1100. So it is 55%. So 1000 का 55% is your revenue. So you got to know first one, revenue समझे आपको? So first point is contract revenue. Yes sir, we got that. ठीक है? Contract price multiplied by, this is contract price multiplied by percentage of completion. And what is percentage of completion?
cost divided by actual cost divided by estimated cost. Contract expense 500 plus 105. Contract expense is actually work certified plus work uncertified की cost है. This is cost incurred for work certified. Cost incurred for work uncertified. Cost है वो. Work certified is actually profit cost plus profit होता है. But here work certified की cost is given. Cost plus recognized profit minus recognized losses. Now there is no recognized profit over here because 1100 and 1000 is your revenue. So 1100 minus 1000 means you are in actually loss. कितने का loss है? Cost is 1100. Cost is 605 minus 100. So you have to present this also. Cost plus recognized profit minus recognized losses. Because customer won't pay you loss. That's why you have deducted losses. It's a selling price. In simple language, it's a selling price. Advance कितना received हुआ? Advance you received 400. No, progress payment received, not advance. Progress payment. Advance कुछ नहीं मिला. Retention कितना है? Retention 140 to be received. And progress billing. Billing कितने का हुआ? 400 मिल चुका है. 140 मिलना बाकी है. So 540 is a billing amount. And gross amount due to customer. Now this is very important. Gross amount due to customer. How you are going to calculate? This is IMP. So ये आपके disclosures है. What are the disclosures? Revenue, expenses, cost minus profit plus revenue recognized. In simple language, revenue recognized is revenue. Advance received nothing. Retention, yes. Progress billing कितने का किया? 540. Out of that, you paid only 400, 140. ये billing है. ये दोनों मिला के progress billing है. लिखो. Progress billing. This is called as retention. This is called as retention. And gross amount due कैसे निकालोगे? Estimated loss कितना था बेटा? Estimated loss 1100 minus 1000 and actual loss revenue कितना बताया? 550. 550 revenue आया ना आपका, ये देखो 550 1000 का 55% 550 और कॉस्ट कितना इनकर किया? 605 55 विच एवर इज हाइयर. सो ये आपका रिकॉग्नाइज लॉस था. एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर is actual cost 605. Yes, amount due to customer, but he is not going to pay you 100 rupees ka loss. So he is going to pay you only, this is recoverable. This is recoverable. And billing kitne ka hua? Billing is 540. So you have to pay to customer 35 rupees. It's a liability. Recoverable kitna hoga? 605 minus 100. But he has made the billing of 540. So now you have to pay to him 35 rupees. ओके 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, एक बार हम लोग लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट इट इन रफ पेजेस. रफ पेजेस पे लिखो, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे. आप लोग 100 पेजेस के बुक में लिखना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू अंडरस्टूड इट देन बेटा वी विल राइट इट. टेल मी प्रैक्टिस चाहिए आपको तो वी विल राइट इट. इफ यू अंडरस्टूड इट यू कैन डू योर प्रैक्टिस बाय योर ओन. स्क्रीनशॉट्स ले लो. सो यू ओनली डिसाइड. मेजर स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं जाऊंगा. इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिस हियर देन बेटा आई विल टेक. अदरवाइज यू हैव सेकंड ऑप्शन. टेक स्क्रीनशॉट्स एंड डू प्रैक्टिस बाय योर ओन व्हाटएवर यू वांट. चलो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं लेता हूं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बेटा आप लोग कर लो. अच्छे से समझा होगा तो. और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. 5-10 मिनट की तो बात है. आप बोलोगे वैसा. वेटिंग फॉर योर फीडबैक सर.
दीक्षा बोल रही है प्लीज राइट इट सर। दीक्षा बोल रही है। स्वाति बोल रहे प्रैक्टिस बाय आवर ओन। श्रबोनी दास अंडरस्टैंड द। बाकी बच्चे बोलो ना बेटा। दीक्षा अकेली बोल रही है। दीक्षा प्लीज बेटा, अभी मैं मेजोरिटी के साथ जाऊंगा। कोमल भी बोल रहे हैं हम कर लेंगे। सुनील कुमार बोल रहे हैं चलो आज एक दिन हम लोग दीक्षा का सुनते हैं। दीक्षा तेरे लिए कुछ भी, चल बेटा लिखते हैं चलो। यस बेटा लिखो। डिस्क्लोजर्स अंडर S7। थोड़ा सा लिखा तो मजा आएगा सुबह सुबह। रब पेज पे लिखना बेटा। सबने प्रैक्टिस अवर सेल्फ लिखा है, ठीक है, पर दीक्षा के लिए चलो लिखो। क्या लिखेगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। चलो याद कर लो सब लोग, कितने डिस्क्लोजर्स देने बिना देखे याद करेंगे। एक देखो, कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड के बाद रिटेंशन, प्रोग्रेस बिलिंग एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर। ओके, हो गया याद? हो गया याद? चलो तीसरा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होंगे तो ऐड होंगे प्रॉफिट में, लॉसेस होंगे तो रिकॉग्नाइज लॉसेस लेस करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस हमें पता है क्वेश्चन में से 500 प्लस 105। लॉसेस हमें पता नहीं बेटा, तो ये माइनस करने हैं, लॉसेस का पता नहीं। 4 नंबर पे एडवांस रिसीव्ड था बेटा, जो कुछ भी नहीं मिला, ये 605 है। रफ में लिख रहे हैं हम लोग, अभी उतना समझ लो। उसके बाद प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग कितने का था बेटा? 400 प्लस 140। प्रोग्रेस बिलिंग 400 प्लस 140, 540 का था। देन रिटेंशन 140 एंड 7 नंबर पे था ग्रॉस अमाउंट ड्यू। टू और फॉर पता नहीं, कस्टमर। ये भी वर्किंग बनाएंगे। याद हो गया? याद हो गया, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वर्किंग नोट 1। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू ये कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1000, cost till date, cost till date is 500 plus 105, 605 plus 605 upon 605 plus 495, that is 1100. %55, 550. 550 will be the contract revenue. Recognize loss, working note 2. Loss to be recognized. Number 1, actual or estimated, whichever is higher. Higher of actual is 605 is a loss and 550 you recognize the ये, so 605 minus 550, 55 and 1100 is a total cost and contract price is 1000, so 100 whichever is higher, so recognize loss is 100. So 605, sorry, 605 minus 100 is loss आया ना 505. Yes, 505.
and last one gross amount due. Gross amount due is billing amount. Sorry, it is cost minus losses minus billing amount. Cost is 605 minus loss is 100 and बिलिंग हुआ है 540 का. कितने का बिलिंग हुआ है? 540. सो नेगेटिव 35. मतलब ग्रॉस अमाउंट हमें कस्टमर को देना है. इजी चे बेटा, प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन की. मैंने लिया है मेरे साइड से, मैंने ये साइड से मेरे साइड से रफ में क्या होना लिया है. प्रैक्टिस करो इसकी. इजी था ना? यस. दीक्षा बोल रही है नाउ आई गॉट इट क्लियरली. नो बेटा, आई डोंट थिंक सो. कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुआ है? हुआ है क्या? किधर? पूरा क्लियर हो गया अभी तो 100%. दीक्षा, थैंक्स टू दीक्षा, सबको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा. यस सुनील कुमार. प्रैक्टिस. दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन रे. दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन. सीए फाइनल का क्वेश्चन था वो. S7 वॉज इन सीए फाइनल एट माई टाइम. क्या बच्चे की जान लेगो क्या? S7 ऐसे डाल के सर हमारे ऐसे है, कुछ टेंशन मत लो. एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से. कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, अभी वी आर रेडी टू फेस इट. सर इलो1 का स्क्रीनशॉट लेना है? चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. चलो इलो1 का. ये अभी नंबरिंग नहीं लिखेगा हमें. ले लो, रुको. अभी तो मॉड्यूल में से भी देख के लिख सकते हो ना. क्या है इतना? मॉड्यूल का फॉर्मेट थोड़ा अलग है क्या? अपना तो स्टेप बाय स्टेप काम है भाई. बड़ा इसके ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके नहीं ले पाऊंगा. कुछ है क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, इंसेंटिव्स वगैरह के. बट अभी जितना मॉड्यूल में उतना ही मैंने लिया है. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है इसमें, अभी वो टाइम नहीं इतना. आई क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. बाकी जो यदि आपको करना होगा तो सजेशन इतना ही रहेगा, आप स्कैनर खरीद लो. और वो भी नहीं है तो आप फिर यस पीसीएमसी बैच के रिकॉर्डिंग ले लेना, तो उधर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे. क्योंकि इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता. पूरा स्टडी मटेरियल कवर करवा दिया आपका. ठीक है, चलो लास्ट इलस्ट्रेशन. इसके बाद हम लोग S9 कर लेंगे थ्योरी. आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आपको. मुझे भी पता है स्क्रीनशॉट्स लेके आपको बहुत सारा आपने किया हुआ है,
और ज्यादा दिमाग में नहीं जाएंगे आपके। चलो ट्राई करो फटाफट, 5 मिनट। बहुत ही सिंपल है रे। विच इज हायर रिकॉर्ड करना है ना। एक्चुअल प्रेजेंटेशन गलत हुआ है। Losses to be recognized is higher of estimated loss and actual loss. इसे प्रेजेंट करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, बताता हूँ। एस्टिमेटेड लॉस और एक्चुअल लॉस। इट्स द सेम क्वेश्चन बेटा, एग्जाम्पल 2 जैसा था। टोटल कॉस्ट इज, यस, 64 लाख प्लस 32 लाख इज एक्चुअल कॉस्ट, ये फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट दोनों को ऐड किया, माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 lakhs. So your answer is 12 lakhs. And actual loss is revenue minus, अभी रेवेन्यू कैसे निकाला वर्किंग नोट 2 में, ये वर्किंग नोट 2 होनी चाहिए थी, सॉरी, और ये स्टेप 1 होना चाहिए था। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है थोड़ा। रेवेन्यू इज contract price multiplied by percentage of completion, and 6499, that is the actual cost divided by total cost, 67%. यस, ये इजी था क्या? चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लिया होगा। उसका स्टेप 1 है रेवेन्यू का, वर्किंग नोट 2 एंड रेवेन्यू का स्टेप 1। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, एक नंबर। सिंपल, यस। टेक अ ब्रेक अप टू 8, अच्छे से लो ब्रेक, एक अच्छा ब्रेक लो। 8:50 तक ब्रेक लो, क्योंकि मुझे फुल एनर्जी चाहिए आप में। 15 मिनट का प्रॉपर ब्रेक लो, थोड़ा खाना पीना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, एंड नया स्टैंडर्ड वी विल मीट एट 8:55, ठीक है? चलो 8:51, सॉरी 8:51।
Welcome back, welcome back, welcome back once again for new accounting standard, that is the revenue recognition. Revenue recognition ये standard आया क्यों? So first time, why this standard, sir? Why? Whenever you're starting with any accounting standard, एक तो this is income related standard. Okay, this is also income related standard. Revenue, but obvious, revenue is income. Now, sir, what is the revenue recognition? Try to understand. When you are recording your revenue, how much revenue you are going to record it on the credit side? ये हमें इसमें से सीखना है कि हम लोग क्रेडिट में कितना रिकॉर्ड करेंगे. So, revenue recognition is basically, what is revenue? Scope and objective. हाँ, अच्छा, उसके पहले मैं कुछ बताता हूं आपको. Let's understand it quickly. देखिए बेटा, income is revenue. And now question is कि हम लोग कितना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे. Why this problem? एकदम सिंपल सा एग्जांपल आई एम गिविंग यू. You paid me classes fees. Example, you paid me classes fees. Now I have not yet provided this service. Okay, you paid me classes fees on 1st of Feb. Class is of 30 days or 60 days. So we are going to finish it on 1st of April. Now question is, up to 31st March, should I record 10,000 rupees if you paid me 10,000? Example है, इतना कोई देता नहीं है भाई. 10,000 rupees. So you will pay me 10,000 rupees and accordingly 100% income I will recognize on 1st of Feb. Second one, should I divide this income up to 31st March 5,000 and after 31st March 5,000? Or should I record this income when I will complete my service? पूरा का पूरा 10,000 on 1st of April. Now, sir, there is variety of accounting. Some people will record it on 1st Feb. Some will record proportionately. And some will record on 1st of April. समझ में आया? So that's why S9 is there. बेटा आज समझ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. एक बार हिंदी में समझ लो पूरा कि ये स्टैंडर्ड आया क्यों. सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्रेडिट साइड से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड है. क्रेडिट साइड मतलब क्या बेटा? इनकम. सो इनकम रिलेटेड स्टैंडर्ड. अभी ये स्टैंडर्ड क्यों आया? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है. रेवेन्यू दो तरीके से होता है, गुड्स एंड सर्विसेस. नाउ फॉर एग्जांपल सर्विसेस, सपोज मैं आपसे 10,000 रुपया फीस ले रहा हूं. एग्जाम्पल के लिए समझ लो, 1 फरवरी को मैंने आपसे 10,000 रुपया लिया. क्लासेस ज्वाइन किया आपने, 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रही है, आपने क्लासेस ज्वाइन किए. 1 फरवरी को 10,000 रुपीज यू पेड मी, आपने मुझे पे किया. अभी मेरा अकाउंटेंट ये 10,000 इनकम तुरंत रिकॉर्ड करेगा क्या? दूसरी चीज, बैच खत्म होने वाली है 1 अप्रैल को, तो मेरा अकाउंटेंट ये 5,000 रुपया आप भी रिकॉर्ड करेगा 1 फरवरी से, सॉरी 1 मार्च पकड़ते तो इजी जाएगा. 1 मार्च पकड़ते हैं, सो 1 मार्च से 1 मई, 1 मार्च से 1 मई, मतलब इधर 1 मंथ का इनकम रिकॉर्ड करेगा, इधर 1 मंथ का इनकम रिकॉर्ड करेगा. गलती से डेट्स गलत हो गए मेरे. 1st March to 31st March 1 month, 1st April to 1st May 1 month. So should I record it at 5,000? और पूरा 10,000 जब मैं सर्विस वापस 10,000 रुपया पूरा जब मैं सर्विस रिकॉर्ड करूंगा, पूरी सर्विस कंप्लीट करूंगा, उसी टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा.
कैसे करना है, इनिशियली, प्रोपोर्शनेट और आफ्टर कंप्लीशन, इसीलिए है एस 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. I hope you got the concept behind it. Every one of you. Say yes or no. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? क्यों सीखना है ये स्टैंडर्ड? क्यों सीखना है ये स्टैंडर्ड हमें? What do you think? What do you think? Yes. पवित्रा जी, बहुत बढ़िया कमेंट बेटा. Good morning, sir. Due to college, I couldn't attend your live classes. Every time I watch your recorded lectures, I don't get the feeling of virtual classes. It's like you are standing in front of me and you are standing in front and giving lecture. This is the first time I'm attending your live classes. My CA Guru. Yes, beta. Thank you. Yes. What do you think, beta? क्या लगता है आपका? Guess. Tell me a guess. Whether 10,000 initially or proportionate. Sunil Kumar is saying proportionately or after completion of service. एक ही आंसर आया है. Darshan is saying nice story sir, understood the rationale behind this. Very good बेटा. Proportionate. एक ने लिखा है एक्रूअल. अब एक्रूअल में क्या लिखना है? आइदर कंप्लीशन या स्टार्टिंग में या प्रोपोर्शनेट. ये 3 ऑप्शंस. एक्रूअल से मैं क्या बोलूं बेटा? एक्रूअल मतलब इनको प्रोपोर्शन बोलना है शायद से. स्वाति को प्रोपोर्शन बोलना है. ओके, लेट्स रीड इट. देखते हैं व्हाट इज रेवेन्यू. सो स्क्रीनशॉट 1 से शुरू करेंगे. आज तो कॉन्सेप्ट्स है, कल बहुत सारा थ्योरी होगा, प्रॉब्लम्स होंगे. कल मैं बहुत मस्त मस्त केसेस लेके आऊंगा आपके लिए. ओके, यस. यस, कविता भी यही बोल रही है. व्हाट इज रेवेन्यू? सो क्या सीखना है इसमें हमें? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स गुड्स, सॉरी, ग्रॉस इनफ्लो. ग्रॉस इनफ्लो. स्क्रीनशॉट 1 है, अभी रुको. ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और अदर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड. 15 मिनट दें. टू बी रिसीव्ड और रिसीवेबल in the ordinary course of business. In the ordinary course of business, in the form of sale of goods, whatever you want. Sale of goods. रट्टामा रेवेन्यू तो पता होना चाहिए ना. While writing answer, you first understand what is in gross inflow. अरे पैसा मिला, सब पैसा कैश ही मिलना चाहिए क्या? नो, अदर कंसिडरेशन. अदर कंसिडरेशन सर, I taught you for 2 months and beta you gave me beta 5 shirts and 3 pants. Other consideration. Okay, so it's not like cash. To be received, because we are accrual concept follower. Or receivable, I will book it though it is receivable, but income has to be booked though it is received or not received. Accrual concept. So receivable in the ordinary course of business. And why you are getting revenue beta? Ordinary course, day to day activity. Sale of goods के वजह से, rendering of services. Now I am rendering of service. Then sale of goods. And third one, employment of resources by companies yielding interest, dividend, royalty. So beta, you have invested something and you are getting in returns. I invested in bank, I am getting interest. I invested in shares, I am getting dividend.
And I'm also getting, I have given some rights and I'm getting royalty. Okay. So मैं पब्लिशर हूं और मैंने कुछ पब्लिशर को, सॉरी मैं पब्लिशर नहीं हूं, मैं ऑथर हूं. आई हैव गिवन सम पब्लिकेशन राइट्स टू वन पब्लिशर, टैक्स मनी एग्जांपल, and for each book I am getting some royalty. So this is called as interest, dividend and royalty. You got the definition? रट्टामार. चलो स्क्रीनशॉट 1 से शुरू करेंगे. ग्रॉस इनफ्लो of cash or other consideration to be received or receivable in the ordinary course of business. Sale of goods, rendering of service, employment of resources, interest, dividend, royalty. 3 मार्ग है जहां से आपको पैसा आता है. एक है गुड्स बेच के, दूसरा है सर्विस देके, तीसरा है इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी के फॉर्म में. और ये पैसा आने के बहुत सारे चांसेस है. इसी माध्यम से आपको पैसा आता है और इसको रिकॉर्ड कैसे करना है ये बताएगा AS9. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इजी छे एकदम इजी. स्क्रीनशॉट 1. यस. चलो 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 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं. Scope and objective. AS9 is mandatory to all enterprise. It states the basis of recognizing the revenue from sale of goods. ये हमें पता चल गया सर. Scope तो समझ में आ गया. Yes. Does not deals with construction contract. अरे separate AS है ना. AS7 में देख लिया ना how to recognize revenue. Contract price multiplied by percentage of completion. Percentage of completion by 3 ways. Proportionate, survey, physical देखा था, and actual cost divided by total cost. अरे देखा ना पूरा stage of completion. Hire purchase AS19 सिखाएगा, रुको सबर करो. Government grants 12 में already done. Revenue side थी तो government grant कैसे record करना है? AS9 will not help you out. It has a separate accounting standard of AS12 revenue related. Insurance contract, specific guidelines, how to record revenue. So AS9 won't take care. इसकी separate guidelines है. So दूसरा standard उनको घर देता रहेगा तो ये standard क्यों घर देगा भाई? एक ही घर में रहना है. Okay. AS9 घर में रहना है, नहीं तो दूसरे में 9. Then बेटा other standards won't applicable. If other standards are applicable, this standard. Okay. Understood the concept? Yes. चलो 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 चलो. Sale of goods. Now what about sale of goods, sir? So sale of goods acts होगा. एकदम easy. Already we know from foundation level. When performance conditions are successfully fulfilled, when to record revenue? Transfer your goods to that buyer. Okay. So होगा कि ये सब. हाँ. Significant risk and rewards has been transferred. दूसरा, ये already done in the foundation. Property buyer को transfer करनी है, transferred. Risk and rewards transferred. Buyer को property transfer करो, risk and rewards transfer करो. No significant uncertainty of consideration to be received. So no uncertainty, red pen. Main key lines, keywords, rattamar. If at the time of raising any claim, it is reasonably unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognition should be postponed. Line बहुत important है. Ultimate collection, unreasonable, postpone. Words, keywords, red pen words, rattamar.
ये प्रोविजन में लिखना है. You have to write it in the provision by heart. By heart. एक कौन सा था स्क्रीनशॉट नंबर 3. स्क्रीनशॉट 3 क्या होता है? बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कौन से नंबर का स्क्रीनशॉट है. सो सेल ऑफ गुड्स में your conditions, transfer your property, risk and rewards are transferred, no uncertainty regarding the consideration. If there is uncertainty of ultimate collection, revenue should be postponed. Yes. Sir, give some cases. कल, आज theory, आज पूरा theory. This is a provision that you have to write. And please understand, AS9 is technical. AS9 ये टेक्निकल છે. Okay. So मेरे प्यारे प्यारे students, I hope you are clear with the concept now. Revenue already better done at in foundation level. ये last वाला line is very important. Ultimate collection. Ultimate collection is important. ठीक है? चलो. Special cases in sale of goods. एक सेकंड ना, मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस से जाता हूँ. सो स्पेशल केसेस विल डू टुमारो. ये हो गया. हाँ, ओके. See, examples of items not included within the definition of revenue. Realized gains resulting from disposal and unrealized gains from holding non-current assets. Sir, profit on sale of asset. Won't be considered here. Write down on question. Theory. And revaluation reserve. Unrealized gain means what? Revaluation of your asset. S9 is not talking about these things. So this profit or loss, we are not going to record over here. Okay. Unrealized holding gain resulting from change in value of current assets. Cost or NRV, whichever is lower, or unrealized gain means current assets value is increasing. Revaluation of current assets. No. Realized or unrealized gain from the changes in foreign exchange rates. S11, sir. S11 won't talk about this. S11 का हाथ है. Foreign exchange. Realized gain resulting from the discharge of an obligation at less than its carrying amount. Liabilities paid less than book value. Unrealized gain from the restatement of the carrying amount. Revaluation of an obligation. Revaluation of liabilities. We are not concerned for that. So how to record for? Ask PP. PP. Current assets of inventory, debtors. We are not concerned for that. S9 will say, my doors are closed. You don't come to our house. You all 5. Please. We don't know your treatment. So this standard is not applicable. These examples are not included. Sale of goods ka, yes, already done. All these 3.
Now we are moving to rendering of services. Examples, I'm not going to take it now. Examples is not going to take it now. Rendering of services. रट्टा मार, ये भी रट्टा मार में आएगा. Proportionate completion method. Recognize revenue. Proportionate, that 50-50% up to 31st March. Whatever completed service, we will record it. Degree of completion, red pen है. Red pen से mark करके दिया है. Construction contract, but it is not applicable. It is just example I'm giving you. Proportionate. So you know the concept of proportionate because construction is a service providing. And completion. You will record revenue when fully completed. If at the time of raising any claim, it is unreasonable to expect the ultimate collection. So beta, you will postpone your revenue. ध्यान में रखना बेटा. Postpone your revenue. Proportionate completion method and completion. So ये भी by heart है. रट्टा मार. Same thing you have to write. So first you have to decide ये किस में आएगा. अरे मैं कौन से स्क्रीनशॉट पे था रे. बुरा हो गया यार, मैं अभी याद ही नहीं रहता. 4 स्क्रीनशॉट 4 है. चलो ले लो स्क्रीनशॉट नंबर 4. Yes. 4th number. Last part of the standard. Income from other sources. Income from other sources. Interest, dividend, royalty. Interest you will record time proportionate. So एफडी किया 1 जनवरी को, मैच्योर्ड होगा 31 दिसंबर, बीच में 31 मार्च है, 3 months 9 months. So you are already aware about this. Royalty is always on accrual basis. If it is receivable whenever you are selling your book, you will get royalty. So royalty receivable account debit to royalty. That publisher is selling goods, he will send the report. Though it is not received, you are going to book it because agreement is there. And dividend. Dividend must be declared by the company. You should not, on estimated basis, you cannot pass dividend entry. Last year they paid me 5%. So each time they will pay me 5%. No. When company declares dividend and you are in the shareholder list, then only you are going to receive it. So record date. Record date is very important. And when company record date पे declare करेगी, फिर आपके book में entry होगी. It is not from the angle of company. It is from the angle of investor. Dividend is from the angle of investor because we are better in the revenue recognition standard, not payment standard. So company must declare it. Then only you can record it in your book as an investor. Okay. आपके बुक में कब रिकॉर्ड होगा? जब आप इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे हो. समझे? Yes, sir. And if there is no significant uncertainty कि भाई हम लोगों के पास अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ही हम लोग बुक करेंगे.
ओके, इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टनिटीज। ये स्क्रीनशॉट नंबर कितना था रे? 5 था। Screenshot 5. And last one, effects of uncertainties. When the ultimate collection with a reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. When the uncertainty relating to collectibility arises subsequent to the time of sale or rendering of services, it is more appropriate to make a separate provision. ठीक है, देखो, if you are not sure about ultimate collection, means आपको पता ही नहीं सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा, तो पोस्टपोन करो। एक बार आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, कलेक्टिबिलिटी के क्वेश्चन है एंड यू आर थिंकिंग कि देयर इज अनसर्टेनिटी, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेपरेट प्रोविजन। ओके, सो सेपरेट प्रोविजन करना, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर्स, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द सर्कमस्टेंसेस इन विच रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। खत्म हो गया रे, एकदम इजी स्टैंडर्ड। ये चार्ट है, देखो ये पूरा चार्ट है एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो आज आपको करने हैं and tomorrow we are going to start with yes, why this standard is important, because they are telling you when to record revenue. बहुत लॉजिकल है। आई होप पूरा समझ में आया होगा। आज बहुत सारा ये चार्ट है ना, ये चार्ट समझ में आया। आईसीए ने बहुत बढ़िया चार्ट दिया हुआ है आपको स्टडी मैट में। सो ये आपको समझ में आया ना, पूरा समझ में आ जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। थियोरी है सर, थियोरी है। थोड़े से क्वेश्चंस रीड करो, मैं भी कुछ केस लॉस दूंगा आपको, मैं भी कुछ केसेस दूंगा, बढ़िया बढ़िया केसेस कल। कैसा ये स्टैंडर्ड थोड़ा रटने वाला स्टैंडर्ड है, बाय हार्ट करना है। स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस स्टैंडर्ड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ AS9, AS9, AS29. Language is important of these two standards. Rattamar points are there, by heart points are there, and students are normally making mistake while writing the concept. They do not have the problem. They understand revenue is recognized or not recognized, but definition, revenue, inflow, goods, services, when to record it is very important. Transfer the property, significant risk and rewards. This word you have to write it in the exam. बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कब करेंगे बेटा? कल तुरंत लेक्चर है। ओके, संडे को बोर नहीं होना है आपको बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सिलेबस वास्ट है ना बेटा, आईसीए ने इसलिए रखा हुआ है। डोंट वरी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। संकेत सर हमेशा आपको सब एस अच्छे से आने चाहिए, यही चाहते हैं, और मैं भी एज्यूम करता हूं कि आपको अच्छे से आएगा। प्राची पूछ रही है 5 क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, कल पूछता हूं S7 और S9 पूरा पढ़ के आना और 5 क्वेश्चंस के आंसर देना। इफ यू कैन आंसर दिस 5 क्वेश्चंस, यू अंडरस्टूड एस कंप्लीटली। आज रीड करो क्योंकि आज थोड़ा थियोरी भी था,
कल मैं आपको पूछूंगा S7 और S9 के क्वेश्चंस बिफोर सेगमेंट रिपोर्टिंग, और कल सेगमेंट रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देंगे. यस, एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी बेटा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.